फोटो निकला सिटन निकला फटाफट वही है ना कर दिया इसी टाइम सेविंग करने हो गया ना तो नहीं तो मोमेंट में ढूंढते ना ढूंढते फिर क्या और देवी में इतना टाइम मेरे पास हाँ वो कर दो और एक थोड़ी नाम पूछ लो नाम बताओ रोहित अभी ईद का अर्जेंट काम है प्रोग्राम के बाद कर लो छोड़ यार बात कर अन्ना देखो मेरा मीठा नारसा का बताओ नारसा ने किया नहीं इसके लिए भी मना कर रहे थे मेजी साहब से बात करके अलाउ कर दिया नारसा का मैडम मेरे को भी नहीं था इनवाइट सबको और बताओ मैं कसम से मैं तो क्या करोगे उसमें प्रॉब्लम नहीं साहब चीफ साहब आएंगे तो फिर काम नहीं ना काम ही करते हैं बस देखो आगे लोग फॉरेनर्स बुलाए थे यार अपने देश का नाक की इज्जत का सवाल समझा जाते हैं मैं जाऊँ नीचे बस देख लेंगे भाई ठीक है कुछ रहे तो अपना अपना एडजस्टमेंट फोन कर दो तुम्हें हाँ कर दूँगा
उसको क्लीन कर देना। हाँ प्लीज। हाँ दे दो, मोमेंटो दे दो। मोमेंटो हाँ बुक्स का। राजू जी आगे, साहब आगे। नीचे से अभी बता देंगे। एक मिनट, मोबाइल किसका है? ये मोबाइल किसका है? स्टार्ट मोमेंटो मैं स्टार्ट करूँ? स्कॉट करने के लिए बोलते हैं। नहीं हम स्कॉट करेंगे ना पहले। किसको? आप साथ में स्कॉट करने के लिए एक लाइन बोलेंगे, सो दैट फिर वो आपकी तरह जाए। जैसे मैं करूँगा ना, आप मेरे को इशारा करो, मैं लिखता हूँ। हाँ may I request Dr. Adis Agrawala, President SCBA, Mr. Sukumar Pat Joshi, Vice President SCBA, to kindly escort Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Honorable Chief Justice of India, Honorable Mr. Arjun Meghwal, Union Minister for Law and Justice, Mr. R. Venkat Ramani, Learned Attorney General for India, on the dais. Please. On behalf of the Supreme Court Bar Association, we welcome to all of you for being with us on this glorious and extended celebration of Samvidhan Divas. May I request all of you to kindly stand up for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। May I request Mr. Minesh Dubey to present a sapling to Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable the Chief Justice of India. May I request Kumar Gaurav to present a sapling to Honorable Mr. Arjun Ram Meghwal, Honorable Union Minister for Law and Justice. May I request Mr. Anil Nisani to present a sapling to Mr. R. Venkat Ramani, London Attorney General for India. संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। ये बात बाबा अंबेडकर जी ने कही थी। उनकी बात को हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने अमेरिका में यही बात कही। Baba Ambedkar says, Bharatiya Samvidhan is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Now, may I request our Vice President, Mr. Sukumar Padjoshi, to kindly deliver his welcome address. Honorable Dr. D.Y. Chandrachud, the Chief Justice of India, Honorable Judges of the Supreme Court who are present, I am seeing only one, of course. Sir, you are welcome. Sri Arjun Ram Meghwal, Minister of State, Independent Charge, Minister of Law and Justice, Sri R. Venkat Ramani, our learned Attorney General for India, Dr. Adis Agarwal, our President, whose birthday is also being celebrated today, my colleagues and members of the Executive Committee of SCBA, members of SCORA, and P.S. Parekh Saab, who is here, our veteran, Faizi Saab, senior advocates, my colleagues, officials of the Supreme Court administration, guests from press, ladies and gentlemen. I extend a very warm welcome to all of you in this evening in the continued and most celebrated year of Constitution Day. Why I said this most celebrated is because so many activities in this 1 year, because of our most dynamic Chief Justice, who, in fact, for everything we have to feel proud. The intentions and the execution of ideas, constitutional values, and making the judicial system more inclusive in every which way has made us really proud today. From 25th onwards,
In fact, the celebration is going on 26th. Meghwal Sahab, in fact, opened our eyes on what actually the Constitution meant and what Dr. Ambedkar's contribution to that and how this came into being. In fact, one incident he told us about the adult franchise, which was incorporated. And the way he presented it, in fact, probably that's historic. In fact, Miti Cafe and installation of statue of Dr. Ambedkar is going to be history, and we all are part of it today, because that only shows that how easy and accessible the Supreme Court is, and everybody will have, I think, feel the sense of comfort that access to justice is real. आज आप लोग सब जो हैं यहाँ, कई लोगों ने 50 साल पूरा कर लिए हैं, मेरे से बहुत बहुत सीनियर हैं. कई लोगों ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, अच्छे अच्छे किताबें लिखी हैं. कल हम जब स्क्रूटिनाइज कर रहे थे सारे किताब देखे, बहुत सारे चीज़ इसमें हैं. आप लोग सबको अभी हम इनफैक्ट सम्मान देने का एक टाइम आया है, तो आज आप लोग सब हमारे बीच हैं. और सुप्रीम कोर्ट, आई एश्योर डॉक्टर चंद्रचूड will be very happy to see all of you that you have also in your own way contributed the way to follow at least something, some example of, sir, that Supreme Court is a better place now and will be a better place day by day because of all of you. Thank you so much. Welcome again, and let's celebrate the spirit of Constitution. Justice Masi is here. May I request Mr. Amren Singh to present a sapling to newly elevated Judge of Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Augustine George Masi. Sorry, sir. Now, may I request Learned Attorney General for India, Mr. R. Venkat Ramani, to kindly deliver his address. I carry this little hand machine on my hands to be truly compliant with the Honorable Chief Justice's daily commands in the court. And last year, it's almost a year since Destiny brought to me this office. I thought I'm getting old, but after working with the Chief Justice and the Honorable Minister here in the past 1 year, I think I'm getting young. And there are so many things which one would like to talk about, what's happening in the Supreme Court. The wonderful things that one would not have imagined what the court would be doing, maybe before emergency or soon after emergency. And we want to talk about the Constitution. I think it's a subject on which you can keep digging and digging as if it's a well which will never go dry. And what this wonderful Constitution of India has done, made richer and richer every day by the institutions of governance and people of this country. And that's why when the preamble talks about we the people of India, it is not an idle statement. Not that the most or the least read part of our citizens were recited the constitutional preamble every day in the morning like scriptures and mantras. But it became part, and we inhale this as much as the scriptures and mantras we do every day. And that's a wonderful transformation.
Nobody can doubt the genius of our people today, how we become, all of us individually and collectively, have become managers of our constitution. We become not only managers in a technical sense, but in a very substantive, cultural, social and political sense. And if all that has come from the strength of the constitution, aided and assisted by government, parliaments and people in public life, and most importantly the Supreme Court of India. Those of us who are here are fortunate to be able to practice in the Supreme Court. I find many of you in the early 20s, 30s, maybe in the mid-40s. And those of you who have missed the glorious transition of the court from being a distant spectator of the rights enforcement in this country to be a close participant in the rights transformation. You would probably read it in the leading cases, but you must get in beyond the print of the leading cases, but get to know the spirit behind what happened in each and every one of those cases. That's why I think every year we assemble year after year tirelessly, like that legendary King Vikramaditya carrying that serpent on his shoulders. Tirelessly we keep assembling here every day, every year, not to just read or recite parts of the Constitution, but to pledge in a very fundamental way that we as people will not let down the Constitution, and we as part of the profession have such roles to play that I believe as a professional element, as I have practiced it, that we believe that if you take away your pledge to the constitutional values and become merely a practitioner of law, then it's merely a skeleton which are there. I suppose we should not become skeletons. We should always be living human beings if we want to be living part of the living constitution. So I appeal to each and every one of you who are in the mid-20s and 30s to continue to imbibe these values without which probably our country, its culture, its traditions, its knowledge systems, its values, all that may get dried up. You look at what's happening in the rest of the world, in different Europe or South America or our neighbors, challenges which they are facing in different ways, and how we are able to face it in very significantly important ways. So these are not away from mere reading the Constitution. They are part of the constitutional stories. So that's important for us. For I remember, I won't take much of your time today because a lot of people who have achieved in their life, writing books and having practiced in this court beyond 40, 50 years. And my salutations to each and every one of you who have been able to accomplish this very important task of your professional life. And so all that I would like to say is, I am very fond of reading a quote from a former president of United States way back in 1780. And I keep reading it in law schools and sometimes in public speeches. And that's how it reads. He says, I must study politics and war that my sons may have liberty to study mathematics and philosophy. My sons ought to study mathematics and philosophy, geography, natural history, naval architecture, navigation, commerce, and agriculture, in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, statuary tapestry, and porcelain. And all that he wants to convey is from a study of war and politics, we'll graduate sooner or later into a study of poetry and peace. The Constitution is all about that. So we moved away from colonialism, which was the colonialism of not only places, but also people's mind. Today, both colonialism of places and people's mind is fading away. We are in a world where equality in all sense of the term will continue to occupy our minds and conduct and action, both individuals and governments. In that sense, I find John Adams a prophetic way of putting it. So, as we move further into our constitutional journey, I think let us enable our children not to study politics and war, but to study poetry, philosophy, music, and architecture.
Thank you so much. Thank you, sir. Wish you a happy birthday, Adi sir. May I request our President, Mr. Adi Sagrawala, to kindly deliver the address. Honorable the Chief Justice of India, Honorable the Chief Justice of India, Dr. Dhananjay Chandrachud, Honorable Mr. Arjun Ram Meghwal, Union Minister for Law and Justice, Honorable Mr. Justice K.V. Viswanathan, Honorable Mr. Justice, Justice J.K. Maheshwari, who is our senior judge of the Supreme Court. First, I should have mentioned, and followed by Justice K.V. Viswanathan, and Honorable Mr. Justice Asanuddin Amanullah, and Honorable Mr. Justice Augustine George Masih, and learned Attorney General for India, Mr. R. Venkataramani, Mr. P.H. Parikh, Mr. O.P. Faizi, Mr. Apurva Sharma, who is our Vice Executive Chairman of Bar Council of India and who remained the Chairman of Northeastern Bar Council and Guwahati High Court Bar Association President, distinguished members and office bearers of Supreme Court Bar Association, officers of the registry, and media persons, and my brothers and sisters in legal profession. I am delighted to welcome all of you to this Constitution Day celebration. I am too much indebted to Honorable Chief Justice of India and Honorable Judges who have joined us in spite of the fact that tomorrow is the miscellaneous day. And Honorable Judges are required to read the voluminous files of about 60-70 cases fixed for tomorrow. Our other Honorable Judges have expressed their inability to be with us for having heavy birth tomorrow, and they have to read the file, although our distinguished 4 senior judges have also to read file equally. But you are senior, that's why you take less time and you are able to spare time for us. I am further thankful to Honorable Chief Justice of India, who has made us the part of the Constitution Day celebrations, in which, for the first time in the history of Supreme Court Bar Association, our group photograph of Executive Committee of Supreme Court Bar Association with Honorable President of India and Honorable CJI was done on Constitution Day. We feel proud that the unique statue of Dr. B.R. Ambedkar has been unveiled by the Honorable President of India on the Constitution Day in this highest temple of justice. This was our long-standing demand. Many individual bar members, including Mr. Kaushal Kishore Lal Gautam, were vigorously demanding for this statue. The credit goes to Dr. Ambedkar that the Indian Constitution guarantees protection for a range of civil liberties. We have freedom of speech, freedom of religion, and the abolition of untouchability. The Constitution puts an end to gender discrimination and bets for reservation for underprivileged sections of our society. It is only because of the vision of Dr. Ambedkar that the document so created has lasted this far unaffected by rapid changes in the society during the last few decades. The Constitution of India has served us well and has ensured that the different organs of the state do not overstep their boundaries, while the political systems in our neighboring countries
have collapsed repeatedly, we continue to be a nation governed by the rule of law and guided by democratic values. The Indian judiciary has not allowed itself to rest in laurels. Our judges have been struggling to deal with the backlog of cases. They worked hard even during COVID time when most countries and their judiciary were not functional. I want to inform that Honorable Chief Justice Chandrachud has increased the number of working days in the Supreme Court from 160 to 190 in the year 2024. We expect that in the year 2025, the Supreme Court may cross 200 working days. This is part of the mission of the Honorable Supreme Court to provide speedy justice to all persons. Another area where our courts have made great progress is by using technology to increase access to the courts for the common man. The system of video conferencing introduced and promoted by the Honorable Chief Justice of India has been a watershed. Since COVID-19, the district courts and high courts of the country have heard nearly 3 crore cases, and the Supreme Court did more than 5 lakh virtual hearings, making the country a world leader in virtual hearings. The Chief Justice of India ensured to put in place an SOP and rules for VC hearings to make the transition seamless and free from legal objections. It set up over 2,000 VC cabins, provided VC equipment for 44,443 courtrooms, purchased over 1,500 video conferencing licenses, made provision for 1,732 document visualizers, and deployed mobile e-court van equipped with Wi-Fi and computers. The span of this can be imagined by the fact that 24 virtual courts have been set up in 19 states and union territories to handle petty crimes. Here, the litigant has a choice not to physically go to the court and instead pay the fine online. The Delhi High Court has even started 24 digital courts to deal exclusively with the check bouncing cases under Section 138 of Negotiable Instrument Act. This is increasing access to courts for the litigant apart from being environmentally friendly. We appreciate and we also thank Prime Minister Shri Narendra Modi for launching the Swamitva scheme, which will enable the villagers exercise over ownership rights over their land, leading to socio-economic empowerment. It will also aid in resolving dispute over land and will curb property-related crimes. Another milestone for this government is the overhauling of the criminal laws and the law of evidence by formulating statutes in keeping with the changing times. These will further reinforce our response to crimes and will enhance the faith of the people in the law enforcement machinery. We are proud to share that our demands have received unprecedented support from the honorable judges, as much as could be done at their end without there being any confrontation. We are also hopeful that soon the government will accede to our request to introduce the Advocates Protection Act to provide for medical insurance and to make available land for chambers of lawyers. Just now we had talked with Honorable Law Minister, and he immediately talked to his officers. And today our Honorable Law Minister will be announcing that what the government is doing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. For our lawyers, the insurance, you will have the insurance because Supreme Court Bar Association has decided to have one Supreme Court Bar Association trust in which the government of India
will also have 6 trustees, and each state we will have 1 trustee, and trustee will be the Advocate General. And we will have handsome funds which those trustees, we the 6 will be ex officio member. They will be controlling that fund, and our member, regular practicing member, will get the medical and life insurance free. You have not to pay. We are making this scheme. Our law minister is so kind. Our attorney general is so kind. And once government of India accept, every state government will follow. We will take funds from each state government. We will have 1 trustee from each state who will be, that will be the Advocate General of the state. I would request Honorable Supreme Court to decide the applications for designating our members as senior advocates. The Honorable Supreme Court was kind enough to consider our 2 representations in this regard, and today morning I apprised the Honorable CJI and Honorable Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul that now the members of SCBA have submitted all their requisite documents, and now the application can be decided immediately as per provision of law. Today we are honoring our members who have practiced more than 50 years and who have written books and who got first position and second position in our examination. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. May I request Honorable Mr. Arjun Ram Meghwal, Honorable Union Minister for Law and Justice, to kindly deliver his address. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और कार्यक्रम में जो सब्जेक्ट रखा वो संविधान दिवस का ही रखा, और इस अवसर पर उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ साहब, हमारे श्री R. वेंकट रमणी जी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और श्री आदिश अग्रवाला जी, इनका तो आज बर्थडे है ना। मैं आपके लिए 1-2 लाइनें कहता हूं, वो आप जो कह रहे हो वो कह भी सकते हो, लेकिन अधिकतर जन्मदिन मनाने के लिए जब अपन जाते हैं तो एक वाक्य लिखा रहता है, तुम जियो हजारों साल, साल को दिन हो एक, क्या दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। इसको बोलिए जोर से थोड़ा, तुम जियो हजारों साल, साल के। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे श्री सुकुमार पट जोशी जी, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, रोहित पांडे जी, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ऑनरेबल जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जितने भी सभागार में उपस्थित हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ और भी पीछे खड़े हैं, कुछ ऊपर भी खड़े हैं, कुछ वहां तक भी बैठे हैं, उन सबको प्रणाम, नमस्कार। देखिए, संविधान दिवस के अवसर पर कुछ चीज़ें सबने ही बोली थी और सबको जानकारी भी है, लेकिन एक विषय जो मेरे ध्यान में आया, जो आपको जानकारी में दे रहा हूं, कि हमारा संविधान बना और 26 नवंबर 1949 को हमने उसको अंगीकार किया। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव करीब करीब 51-52 ऐसा पीरियड रहा, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान
लागू हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ। अब आप देखिए तुरंत ही एक बड़ा काम कौन करता है कि इतने बड़े देश में, इतना विविधतापूर्ण देश जिसमें कोई धोती पहनता है तो कोई लुंगी पहनता है, कोई गेहूं खाता है तो कोई चावल खाता है, कोई कोई भाषा बोलता है, कोई कोई भाषा बोलता है। इतने विविधतापूर्ण भरे देश में इतना शानदार संविधान देने वाले को हमें सम्मानित करना चाहिए। ये अगर किसी ने सोचा तो वो सोचा कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, और बहुत बड़ा काम किया। 5 जून 1952 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को संविधान बनाने के कारण ही एक डिग्री दी गई, जिसका LLD डिग्री उसको बोलते हैं। और डिग्री देते समय जो साइटेशन था वो और ही जबरदस्त था। साइटेशन में लिख के लाया हूं, कोट, द डिग्री इज बीइंग कन्फर्ड in recognition of work done by him in connection with the drafting of India's constitution. The university held him as one of India's leading citizen, a great social reformer and violent upholder of human rights, unquote. हम सम्मान अब लगातार कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, लेकिन क्या कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 5 जून 1952 को सम्मान किया? उससे पहले उन्होंने सोचा, उनकी सिंडिकेट में डिसीजन हुआ, डिबेट हुई कि हम उनको क्यों सम्मान करें, तो बहुत से लोगों ने कहा ये हमारे स्टूडेंट रहे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही बाबा साहब पढ़े थे, हमारे स्टूडेंट रहे, इसलिए हम उनका सम्मान करेंगे। इतना विविधतापूर्ण देश में जहां कॉम्प्लेक्स इतना था कि संविधान बनाना बहुत बड़ा काम था, बड़ा ऐसा काम था कि लोग सोच रहे थे ऐसा संविधान बन ही नहीं सकता। इतना सुंदर संविधान बनाने के लिए जो हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उसको हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज इस अवसर पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जिन्होंने उस समय सम्मान करने की सोची, उसका ताली बजा करके हमें स्वागत करना चाहिए। अब 2-3 बातें जो हमारे आदिश अग्रवाल जी ने कही, क्योंकि आज जन्मदिन है उनका तो मुझे कुछ करना भी पड़ेगा। इन्होंने एक कहा कि हमारे इंश्योरेंस कवर का मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग है। और रोहित पांडे जी ने कहा कि आज संविधान दिवस है तो शपथ लेकर के बोलना। सही बोलूंगा रोहित पांडे जी, सही बोलूंगा। देखिए, संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब कोई आदमी सच्चे मन से संकल्प लेता है तो वो सिद्धि में परिणित हो जाता है जी, ऐसा नहीं है, वो कन्वर्ट होता है। तो आज ये न्याय का मंदिर, मंच पे बैठे हुए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और आप लीगल फ्रेटर्निटी के सब लोग बैठे हैं, जजेज भी बैठे हैं। उनके सामने मैं कह रहा हूं कि मैं इस सब्जेक्ट को मेरे विभाग में मैंने समीक्षा की है और मुझे लगा है कि और सभी लोगों को इंश्योरेंस का कवर मिल गया, लेकिन वकील कम्युनिटी को नहीं मिला। वो जो इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लोग हैं, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा साहब अगर इनको नहीं देंगे तो ये कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं, किसी ने कहा ये हाई कोर्ट में चले जाते हैं, किसी ने कहा या साहब सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं। मैंने कहा वो तो जाएंगे, लेकिन क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? तो उन्होंने कहा नागरिक तो हैं, तो उनको भी इंश्योरेंस कवर मिलना ही चाहिए और मिलेगा। कोई आपके फाइनेंशियल कोई अड़चन आ रही है तो आदिश अग्रवाला जी आपके जन्मदिन पर वो फाइनेंशियल वो अड़चन भी हम दूर करेंगे और आपको इंश्योरेंस कवर दिलाएंगे। वो 5 करोड़ तो ट्रेजरर के पास भी पेंडिंग है ना, अभी 11 हो गया।
पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। जो ये इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं उनके साथ आपको मैं बैठाऊंगा, पैसे जितने जरूरत होगी हम भारत सरकार से देने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको दिलाएंगे इंश्योरेंस को। ये आपकी बड़ी डिमांड भी है लंबे समय से। दूसरा बड़ा विषय है, वो भी आपके जन्मदिन पे ही कह रहा हूं, वो है चैम्बर बनाने का। वकीलों के चैम्बर की कुछ कमी है और उसके लिए जगह का भी कुछ अभाव ऐसा बताया गया। जगह का भी अभाव है क्या और पैसे का भी अभाव है? दोनों का ही है क्या? तो जगह तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, कहीं न कहीं उपलब्ध कराएंगे और पैसा मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से उपलब्ध करा दूंगा जितना आपको चाहिए। तो चैम्बर की भी कमी नहीं आने देंगे। हैं? जगह भी कर देंगे तो पैसा मैं दे रहा हूं ना आपको, तो पर करिए आप। तो इनका जन्मदिन तो अच्छा मनाना भैया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो इनके जन्मदिन की। दूसरा बड़ा काम आपने आज किया, मुझे आप बताया गया, आदिश अग्रवाला जी ने भी बताया, रोहित पांडे जी ने भी बताया कि बार में जिन्होंने 50 साल पूरे किए हैं ऐसे कुछ वकीलों को हमने सम्मानित किया है। ऐसा ही किया है ना? मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 50 साल बार में पूरा करने का मतलब वो 75 साल के आसपास रहे होंगे सबसे, है कितना? 78 82 ताली बजा के स्वागत करिए इनका। देखिए क्या, और ड्रेस भी जोरदार पहन के आए। 82, वाह, वेरी गुड। हैं 84 देखिए 82, देखिए 80 प्लस के लोग बैठे हैं और वही ड्रेस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वही ड्रेस पहना करके यहां मूर्ति का अनावरण किया, उसी ड्रेस में बैठे। जी सर, यू वांट टू से समथिंग? वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। और उसमें यह भी बताया गया कि जिन्होंने कुछ किताब भी लिखी है उनको भी अवार्ड दिया है और बुक्स भी लिखी है। अब एक चीज मेरे समझ में आती है, मैं सोसाइटी में रहता हूं, हो सकता आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मैं कई ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैं एमओस फाइनेंस था तो मैं एक बार सीए इंस्टीट्यूट में गया, ऐसे ही आपकी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां जिन्होंने 75 साल पूरे कर लिए उनको सम्मानित किया जा रहा था। आपके यहाँ ऐसा हो तो एक आप प्रोजेक्ट ले लेना। आदिश अग्रवाला जी, आपके लिए बता रहा हूं, जिनके 75 साल हो गए हैं, 80 साल हो गए हैं, उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। मैं ये नहीं मानता सेटल्ड नहीं है, वेल सेटल्ड हैं। कोई बाहर रहते होंगे, कोई दूसरे शहर में रहते होंगे, कोई इनके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनको अकेलापन फील होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या ऐसा कोई प्लान तैयार कर सकता है जो इनको कहे, जो यंग प्रोफेशनल हमारे एडवोकेट आते हैं 25 साल के, वो महीने में एक बार इनके घर जाए और एक योजना का नाम हो वी केयर, वी केयर, हम आपका ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई बीमारी हो गई, अचानक दवाई की जरूरत पड़ गई, तो वो एडवोकेट इनके टच में, इनको आप उसको जोड़ दो। नहीं, इनके परिवार के लोग करेंगे मदद, ऐसा हम ये नहीं चाहते कि परिवार के लोग मदद नहीं करें, वो करेंगे, लेकिन कभी कभी ये टेलीफोन करते हैं। कभी कभी ऐसे भी मैंने सी इंस्टीट्यूट में देखा कि वो कह रहा मैं बच्चे से बोल ही नहीं रहा हूं, तो मैंने कहा लड़के कितने हैं? बोला एक ही है। तो फिर मैंने कहा बीमारी होती दवाई कैसे लाता है? यही बड़ी समस्या है। तो ऐसे कुछ जो छोटी मोटी समस्या होती है, ये सोशल प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ नहीं घटे, कोई हो ऐसा तो एक आप प्लान बना लीजिए, वी केयर, और उसके लिए भी हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं से पैसा दिला देंगे। एक सीनियर एडवोकेट जिसने 75 साल पूरे कर लिए, 80 पार कर लिया, कोई एक पैरामीटर बना दीजिए। उसके बाद एक यंग आपका एडवोकेट जिसकी 25 साल की उम्र है, उसको आप उसके साथ जोड़ दीजिए और कहना कि मैंने इनको गोद लिया है, मैंने इनको गोद लिया है। और वो महीने में एक बार जाकर के उनसे पूछे, सर अंकल आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम? तो वो कुछ न कुछ 1-2 महीने में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दोस्त बन जाएंगे। तो जब दोस्त बन जाएंगे तो कोई न कोई मन की बात कहेगा। क्या है कि इनका भी जीवन का अनुभव है, ये किसको सुना मैं? पत्नी अगर सुने तो सुने, नहीं तो नहीं सुने भाई।
और लड़के कहते हैं जी आप तो बहुत बोलते हो, कोर्ट में जाके बोलना, यहां क्यों बोल रहे हो? तो जो ऐसे यंग प्रोफेशनल जिनकी सुनने की क्षमता अधिक हो, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बदनाम का विषय नहीं, सुनते भी हैं बहुत से। मैं तो खुद, मैंने मेरी पत्नी पे किताब लिखी, बदनाम का विषय नहीं है। मैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इंडिया साहब को मैंने दी है भी किताब, आप चाहो तो आपको दे दूंगा। मैं एकमात्र शायद ऐसा मंत्री हूं जिसने पत्नी पे किताब लिखी है जिसका नाम है एक सफर हम सफर के साथ। पत्नी का विषय नहीं है। बच्चे भी कई बार अलूप हो जाते हैं जी, मैं जानता हूं साहब, मेरा भी जैसे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा कम बात करता मेरे से, एक ज्यादा करता, क्या हो गया? तो इसमें वो उसका टेम्परामेंट है। तो ऐसे भी कई बार पत्नी कहे भी ठीक है आप कहीं और सुनाओ, ऐसा होता है, कहीं न कहीं होगा। तो वहां कौन सुने इनकी बात? वहां वो यंग प्रोफेशनल जो 25 साल का है, ये हमारे धंधे में ही है ना साहब, वकील ही तो हैं, तो हमारे पेरेंट्स नहीं है क्या? तो क्या हम इनकी सुन नहीं सकते क्या? इसलिए आप एक योजना बनाइए जिसका नाम हो वी केयर। बना सकते हो क्या पांडे जी? ये मैंने सीए इंस्टीट्यूट में बनाई, बहुत सक्सेसफुल योजना चल रही है। सीए इंस्टीट्यूट में पूछ लेना जाकर के, सीए इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में ही है, यहीं कहीं, हाँ आप जाके पूछना। वी केयर करके एक प्रेसिडेंट आया था बहुत अच्छा, उसने योजना चलाई। आप बॉम्बे में कोई आप अपार्टमेंट में रह रहा है, कोई सीए बड़ा पैसे वाला है लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। तो वो जब लड़का नया सीए जाता है ना, अंकल मैं सीए इंस्टीट्यूट से आया हूं और मुझे कहा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, कोई आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, मुझे बताओ, मेरे से बात करो। तो 1-2 महीने में तो उन्होंने बात नहीं की, बाद में वो दोस्त हो गए। तो ये सक्सेसफुल प्लान है और हमने करके देखा है और भी कई क्षेत्रों में देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान दिवस का अवसर है, वकीलों का ये पूरा परिवार है, भारत में भरता ये हुंकार है और करता स्वाभिमान का संचार है। वाह, क्या बात, ताली बजाइए भाई जोरदार। करता स्वाभिमान का, मैंने संचार लिखा, आपने संचार लिखा। देखिए मन कैसा मिल रहा है जी, कैसा मेरा मन आपका मन एक हो गया जी। इसका मतलब आप मेरे मन के साथ जुड़ गए, आप ही लिखते हो ना, तो इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत जोरदार काम बात कही उन्होंने। इसलिए ये कुछ काम आप करिए, बाकी जो 2 काम मेरे को आपने दिए हैं 50 साल पूरे होने पे, अब वो कौन सा राइटर है, वेस्टर्न राइटर है या कौन है, जिसने एक कंसेप्ट दिया, पे बैक टू द सोसाइटी। जो आदमी 50 साल की उम्र पार कर लेता है उसको वापिस सोसाइटी को कुछ न कुछ देना चाहिए, वो कंसेप्ट किसी ने दिया है। अब मेरे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका है कंसेप्ट का नाम पे बैक टू द सोसाइटी। वो आगे लिखता है कि हम संसार में आए, हमारे पांव में जूते नहीं थे तो कांटे चुभते थे, तो हम चल नहीं पाते थे, तो किसी चर्मकार ने हमारे लिए जूते बनाए। हम संसार में आए तो नंगे थे, हमें ठंड लगी तो किसी बुनकर ने, बुनाई करने वाले ने हमारे लिए कपड़े बनाए। ऐसे बहुत से काम किसी ने किए। हमारे बरसात में हमें परेशानी हो रही थी तो किसी ने हमारे लिए छाता बनाया, किसी ने हमारे लिए मकान बनाया। तो 50 साल के बाद हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वापस कुछ सोसाइटी को दें। इस कंसेप्ट को उसने कहा था पे बैक टू द सोसाइटी। तो जिनकी 50 साल बाहर में जिन्होंने काम किया, 70-75 साल के हो गए, 80 के भी हो गए, वो पे बैक टू द सोसाइटी की तरफ बढ़ें और जो यंग प्रोफेशनल है वो आपकी सेवा के लिए आगे तैयार होंगे। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है। जब दादा बूढ़ा होता है तो पोता अंगुली पकड़ करके कहता है मेरे साथ चलो खाना खाने के लिए, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो बाप हो चाहे दादा हो, अच्छा चलना नहीं आता क्या, तो बच्चे की अंगुली पकड़ते हैं। तो बाप उस समय अंगुली पकड़ता है, जब दादा बड़ा हो जाता है तो पोता उस समय अंगुली पकड़ता है। यही भारतीय संस्कृति है। एक दूसरे की अंगुली पकड़ें, सहारा बने, इस समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। यही संविधान की भावना थी, यही संविधान निर्माताओं ने कल परिकल्पना की थी कि हमारा देश महान बने। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा
अभियान चलाया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें भी हमें कहीं न कहीं जुड़ना है। मुझे लगता है कि संविधान दिवस के अवसर पर मैं चाहता हूं कि संविधान में जो भावना थी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने भरी थी कि हम देश को महान बनाएंगे, हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, हम देश को ग्लोबल लीडर बनाएंगे, उस दिशा में हम तेजी से बढ़ चले हैं और उसमें वकीलों का सबसे बड़ा योगदान होगा। ऐसा विश्वास करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भीम। There is one announcement. May I request Mr. Sukumar Parjoshi, please come. सर बार के तरफ से आपको नमस्कार। और सर आप इतना हमारे बारे में सोचते हैं और इतना अच्छा लीडरशिप करते हैं। अभी हम सब ने मिलकर इनफैक्ट धीरे धीरे गुफ्तगू करके इसीलिए आपको हम मेंबरशिप सर आपको सर अभी आदिश भाई के आदेश से और सबसे सलाह करके मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारा मेंबरशिप स्वीकार करें और रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहिए। आपने इतना सारा बताया सर, आप हमारे साथ हम बहुत ही हम धन्य मानते हैं हमको कि आप हमारे साथ हैं सर। और हमारे अब आज से हमारे सदस्यता आप ग्रहण करें सर। एंड सर यू विल बी द डिस्टिंग्विश्ड मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड सर ऑनररी मेंबर for life of the SCBA. And sir, you thank you sir. मेघवाल सर, हमारे लिए आपके पास विजन है, आपका लगाव हमेशा बार के लिए रहता है, आपसे बड़ी उम्मीद है और जो आप पूरी करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ मे आई रिक्वेस्ट द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट एडमायर्ड अमंग द लीगल फर्टर्निटी ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस D.Y. Chandrachud, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू काइंडली डिलीवर हिज एड्रेस। Thank you. My very distinguished colleagues in the audience, Justice J.K. Maheshwari, Justice K.V. Vishwanathan, Justice Amanullah, and Justice Augustine Masih. In the mornings in the coffee lounge and after the court rises for the day, they are to me Jiten, Vishi, Augustine, and Aman. Shri Arjun Ram Meghwal ji, Learned Attorney General for India, Adish Agarwal ji, Pati Joshi ji, and Rohit Pandey, all the senior and younger members of the bar, and ladies and gentlemen. आज़ादी और संविधान का एक अटूट रिश्ता है। और रिश्ता कैसे बना? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, हम आज़ादी पाते हैं जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। तो आज़ादी तो मिल गई, 15 अगस्त 2023 तो बीत गया है दिन, अब कॉन्स्टिट्यूशन डे आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हालांकि 3-4 दिन पहले था। तो आज समय ये है जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। और मूल्य कैसे चुकाएं? अपना उत्तरदायित्व निभा के। परसों मैं संविधान दिवस पर अमर उजाला पढ़ रहा था। अमर उजाला में एक बहुत सुंदर कविता मैंने पढ़ी।
अमलेंदु शुक्ला ने, उनका नाम है अमलेंदु शुक्ला, जिन्होंने ये कविता लिखी है संविधान पे। तो 4 शब्द हैं तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ। वो हैं, हम नहीं, वो हैं। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ, उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूँ। रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, कर्तव्यों का लेखा सौंपा है आदर्श नया गढ़ जाने को। संविधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है, सारी शक्ति दे डाली है तुमको भारत को स्वर्ग बनाने को। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, लेकिन मन घायल होता है जब कोई भूखा मरता है। आंखें नदियां हो जाती तब जब दूध बिना बच्चा रोता है। समता देकर सोचा था अब अंतर नहीं कहीं होगा, पर दिल छलनी होता है जब कोई अवसर खोता है। आंखें नदियां हो जाती है जब दूध बिना बच्चा रोता है। एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूँ। पंथ निरपेक्षता का सच्चा पथ तुमको बतलाता हूँ। उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत कर मैं लाया हूँ। इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज पढ़ाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। In 1866, there was a woman by the name of Cornelia Sorabji. Cornelia Sorabji did her graduation from the then Bombay University. She studied law at Oxford. She wanted to come back to India and improve the lot of the Pardanashin women. I thought I must mention this because as I was looking at the audience, I said to myself how different our society is today from when Cornelia Sorabji entered the legal field. She was one, and she was denied the opportunity to be one because she was denied entry into the legal profession. So she did her LLB from Bombay University after returning from Oxford, but she couldn't get entry to the Bombay bar. So she goes to Allahabad, and she appears for the pleaders examination in Allahabad. Parsi woman, going to the UK, coming back, not able to practice in Mumbai, goes to Allahabad, appears for the pleaders examination, all to gain entry. But now looking around at this audience today, I see not just a sprinkling of women, not just one woman, not just a sprinkling of women, but predominantly the voice of the women, which is now appearing in the emerging Supreme Court of today and the Supreme Court Bar Association of today. But do we take this for granted? Is this an accident? The other day when we were celebrating Constitution Day, we had judges, we had chief justices from across Africa, from the global south. While I was talking to them in the Chief Justice's conclave, the law minister spoke to the ministers in the ministers' conclave. And I was listening to each one of them from the Ivory Coast, from Botswana, from Ghana, from Eswatini, of course from our own neighborhood, Nepal, Bangladesh. And I said to myself, how blessed are we as Indian citizens? As I started to hear the stories which emerged from different states in Africa, I said to myself, how truly blessed and lucky are we to be a part of this nation and to be a part of this profession, the Supreme Court Bar. And it is important that we don't take it lightly. It's so very often that you take
what you have so lightly, because we get used to what we have. We get used to the comforts of home. We get used to the love of home. We get used to the love of friends, the friendship at the bar, the camaraderie at the bar. So very often, when you get things not on a platter, there are so many of you who have not got things on a platter, but they have had to struggle for where they are today. But when you get things which become a part of your daily life, you often take them for granted. Just as we take our rights, our entitlements for granted. But it is important that we look around us, in the world around us. It is important that we look around in the world around us, around our immediate neighborhood, beyond our own nation, to realize how indeed lucky we are to be born as Indian citizens at this time, when the Constitution itself approaches the 75th year, and so does the Supreme Court in a very short while from now. This morning, we have about 2,000 plus employees of the Supreme Court of India, and all these employees launched on a blood donation drive. And I was there early morning when the first batch of 6 employees gave blood. I think that reflected in a great deal, and very senior doctors from the All India Institute of Medical Sciences came to the Supreme Court to oversee the process. I invited some of them to come to my court, and I was delighted to see some of the very senior heads of Department of All India Institute of Medical Sciences sitting in the first row observing what happens in the Supreme Court of India. And we had some very contested matters. But I must tell you something very interesting. Sometime back, one of my colleagues had an attack of dengue. We needed a blood transfusion. But we drew on the credit of the blood which was given by our employees during the last blood donation camp to draw on the credit which was available to us as a court to ensure that my colleague came back to normalcy very quickly by the blood transfusion. So this is again a reminder that all of us are bound together in this cycle of existence. None of us in that sense is different from the other. None of us stands alone. Just as we sit together in this auditorium, cramped up in small seats, but that is an indicator to us, that's a symbol of our existence. We all exist together. And what the Constitution tells us is that we either survive or we perish together. Just yesterday, I had to deal with a very fraught case. The Supreme Court deals with fraught cases every day. Some courts have more than their share of fraught cases. And there are some times, as elections come, the number of fraught cases tend to increase in the court. And we as judges realize it. After elections take place, things settle down. As elections come closer and closer, the court becomes a site for political engagement. That's the truth of our society. I'm not looking at it with any value judgment. So we had this very fraught case which was going on where Dr. Abhishek Singhvi was on one side and the Solicitor General of India was on the other side. And after they concluded their arguments, I turned to my 2 colleagues and I said, let's dictate the judgment on the spot, because that lends a degree of transparency. As I was dictating the judgment, I saw a very interesting sight. The Solicitor General got up from his seat, walked up to where Dr. Singhvi was sitting, and they were both involved in a chat to their heart's content. For a moment, I thought that they were joking about me. I thought perhaps they are saying, "Ye chief itna kyun likh raha hai?" Ya likha raha hai. Whatever they were speaking, maybe they were just speaking about what they had had for lunch, or maybe they were cutting a joke or two about us judges. But that reminds you, the reason why I'm telling you this story is because that gives you the essential nature of our profession. It's a profession of diversity. It's a profession of diversity in terms of gender, which I just mentioned, and increasingly diverse in terms of gender. It's a profession which is very diverse in terms of caste, in terms of region.
The one hallmark of the Supreme Court bar is that all of us, judges or lawyers, have come from different parts of the country, in search of a better livelihood for us. But in the process of giving each one of us a better livelihood, we are also engaged in providing a better existence to our fellow citizens. And that's the big power which all of you command as lawyers. The ability to change the lives of Indian citizens for the better. The ability not to accept any doctrine as a given doctrine. The ability to ask questions. The ability not to be tied down to one dogma. And the ability to realize that though we may have as lawyers, or you may have as your lawyers, different faiths, different ways of dressing, different food preferences, different ideologies, you are essentially one. And that is what really our attire reminds us. Our attire, which is otherwise so sober and so unenterprising, black and white every morning, it reminds us that the similarity of our attire is a symbol of the common existence which we share. And I believe that it is important for all of us as members of the bar to preserve this tradition for the future. These are traditions which take a long time in building, but take only a moment to sacrifice. So it's for all of you as senior members of the bar to pass on these stories, these messages to the younger members of the bar. When I speak to my law clerks, I have quite a few of them, both in the Center for Research and Planning and in my own office, I make it a point to share stories. And the reason why I share stories is that it is in these stories that we convey what we have learned from our own lives. So I'll appeal to the senior members of the bar to share their stories, as Meghwal ji shared just a short while ago, as Mr. Adish Agarwala always shares. So it's important to share these stories, because it is in the stories which we discuss with each other that we realize the essence of our existence. It is for us to make the legal profession broad-based and inclusive, to ensure that the legal profession is broad-based and inclusive. By doing small things, by people who are in charge of their chambers being receptive to people coming from all walks of life. Not for those from Maharashtra only to encourage Maharashtrians, or those from Orissa to only encourage Odiyas, or those from UP to only encourage UPites, or those from Tamil Nadu to only encourage Tamils. It's for us to ensure that we truly make our chambers broad-based and inclusive. Encourage people with different ideas and different thoughts to come into our lives. In doing so, we not merely discharge our duties to the profession, but we also enrich our own lives. Encourage young lawyers to join judicial service. I think it's important that the Supreme Court Bar Association, SCORA, the Bar Council of India, that we ensure that we encourage young lawyers to fan out in diverse directions. Practice in the Supreme Court Bar is only one option for young lawyers. Some of them will attain excellence, others may decide to join judicial service. Create that opportunity, create that space. But above all, I think it's important that on a day where we celebrate the Constitution, that we learn to discharge our duties to the cause of justice. Our duty to the cause of justice ranks much higher than the success or failure in individual cases. Success and failure in individual cases is a matter which is transient. All of us as members of the bar won a lot, lost a lot, because winning and losing is really not in the hands of lawyers. Sometimes it can be even in the hands of an erratic judge. But that is part of the human element that pervades the legal profession. And remember, ultimately,
that it is if you support the institution of justice, which is to ensure that you support the independence of your own judiciary, that the judiciary can truly be able to discharge its duties. Don't expect the judiciary to do something contrary to what you are giving to the judiciary. If you are not giving to the judiciary its own sense of due, how will you expect them to discharge their own obligations towards society? Because your judges come from you and they return to you. They are not distinct from you. So you have a very important opportunity and a responsibility, both to yourselves. Obviously, we are here for the betterment of our own existence, for our families, for our future. But we are also here for the betterment of our profession, and through the betterment of our profession to serve the cause of justice and to ensure that the other side of the profession, the judges who are duty-bound to act in aid of justice, continue to do so. You have to not merely protect your judges, but you have to hold them to account as well. And we have done that when we found, as young lawyers, that there was a straying away from the path of justice. So I think I have spoken a few words of my own on the occasion of the Constitution Day by telling you the link between freedom and the Constitution. I began by telling you two different extremes, what Amlendu Shukla in the present said and what Rabindranath Tagore said so many years ago about the link between freedom and our own conscience. So I'm sure that the members of the bar will continue to pursue the cause of freedom while also retaining your own consciences. It's very easy. It's very easy to forsake your conscience, but keep that light within you burning bright. Namaste. Thank you. Chandrachud sir, really, each and every word, it means a lot for us. Now, may I request Senior Executive Member, please come on the dais. Mr. Arjit Prasad, Mr. Dinesh Goswami, Mr. Wasim Kadri, Mr. Ranjit Thomas. And may I request Mr. Yogandra Pawar Jha to please come on the dais. I now honor those who have secured first and second positions in the examination of Supreme Court Advocate on Record. This year, I am delighted to announce that we have two members of the bar who have secured first position in the AOR examination conducted by the Supreme Court of India in the year 2022. May I request Mr. Anmol Anand, Mr. Geet Ahuja to receive their gold medals for securing first rank in the Advocate on Record examination conducted by the Supreme Court of India. Brinda? And may I request Ms. Brinda Bhandari? Please be here. बृंदा को बुला लेना. किसको? इसके बाद बृंदा को बुला लेना. हाँ. And on behalf of the O.P. Malhotra Memorial Award, they would receive a check of rupees 25,000 each and a memento. This has been instituted by our very distinguished former sister, of course, Justice Indu Malhotra, Yes. in the name of her very renowned and scholarly father, Shri O.P. Malhotra, who wrote that great book on the Industrial Disputes Act. So our thanks to, we must all recognize this contribution which has been made by Justice Indu Malhotra in memory of her father. Thank you. Thank you, sir.
I am grateful to Honorable Miss Justice Indu Malhotra, former Judge Supreme Court of India, for kind gesture. मेरे पास लाया करो लो जल्द हाँ। इधर से जाओ किधर से निकल जाएंगे आप छोटे तुम्हारा नाम क्या है? गीता आहूजा, प्लीज गो एंड रिसीव योर गोल्ड मेडल. जल्दी आ बेटा जल्दी आओ जल्दी जल्दी करना है. लो थैंक यू ये करना है ये भी करना इधर आप पहनाओ सर हाँ चलिए यही साहब ने ये भी आओ इधर आओ जल्दी आ जाओ इधर आ बेटा May I request Brinda Bhandari to come and collect her silver medal for securing second rank in the AOR exam. आप किसका? Congratulations. अभी जल्दी आओ Ganda is there. She is appearing in the God. Oh, very good. May I request to honor Sri Radhakant Tripathi with a memento and certificate of honor. He is proud holder of 3 records in Limca Book of Records and another 2 in the Indian Book of Records. वहीं से आता. It is a long-standing tradition of the SCBA to honor members of the bar who have completed 50 years of the practice at the bar. May I request Honorable the Chief Justice of India and the Law Minister to present a memento and certificate of member of a token of respect. May I request P.N. Gupta, Satyesh Kumar Sinha, Sri Govind Ram Miri, Sri Venkat Raman, R. Venkat Raman, Sri Satyavir Singh Rana, Sri P.D. Gupta, Sri Arvind Minocha, एक एक करके लो. Just a quick photograph. Sri Arvind Minocha, Mr. R.K. Kataria, Mr. Raja Venkatappa Nayak, Mr. Prem Krishna Sharma, Mr. Anil Kumar Uppal, Mr. Satish Chandra Agarwal, Mr. Anand Dev Singh, Mr. Gyana Sambandhan, Mr. O.P. Faiji, Mr. M.K. Pandita. इसमें रोको रोको एक एक करके तभी सिंगल हो पाएगा. You hold it and he will take a picture. That's the idea. Yeah. चलो. Narendra Huda sir, please do. पास पास थैंक यू. चलिए जाएंगे सर. जय नायक सर. मैं चीफ को चल 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 चल. मुझे दीजिए आप. नहीं जाने दो गुप्ता. अब जाने तो सब जा रहे हैं. हो जाएगा. Arjun sir, please come this sir. हो गया ना. Okay. Please come on the dais who have written books by presenting a memento and certificate of honor. May I request? नहीं वो लेके आना है सर. ठीक है. आदि सर के भाई
आदि सर, आदि सर, आदि सर, जल्दी करो Dr. Adis Agarwala, he has written a book, The Concept of International Law. So please, उनके लिए प्रोफेसर दीपक भट्टाचार्य जी। हाँ, अब इनको तब तक इनका कर लेते हैं। तुम विराग गुप्ता बोलो, चलो। Mr. Virag Gupta, a renowned writer, speaker, and expert in cyber and technology and constitution. बोल दे दिया। मिस्टर देवाशीष भरूका, मिस्टर यशराज बुंदेला, बोल दिया। प्रोफेसर दीपक भट्टाचार्य जी, डॉक्टर मुकेश कुमार रवि, मिस्टर प्रसून कुमार मिश्रा, मिस्टर जोस अब्राहम, मिस्टर सईद इम्तियाज अली, मिस्टर पीयूष कुमार मिश्रा, मिस साइनली अत्री, डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता, डॉक्टर राकेश गुप्ता, आप यहीं रोक दो, मिस्टर ललित कुमार इरोम, मिस्टर एचएल कुमार, मिस्टर गौरव कुमार, मिस्टर सौरभ अग्रवाल, मिस्टर सोमेश अरोरा, मिसेस अनीता बाफना, मिस्टर सुनील गोयल, मिस्टर हरिओम मराठा, आगे मत जाने ना, मिस्टर हरिओम मराठा, मिस कनिका सेठ, मिस्टर विजय कुमार, प्लीज थोड़ा जगह होने दीजिए आराम से। मिस्टर रोहन रोमचिम अलवा, फोटो नहीं आएगा। मिस समृद्धि अरोरा, मिस्टर शांतनु मुखर्जी, मिस दीपा जोसेफ, डॉक्टर विवेक सिंह, मिस्टर आदित्य राजारमन अजगांवकर, मिस्टर E.M. सुदर्शना नचप्पन, मिस्टर आदित्य मिश्रा, मिस्टर किशोर कुमार मिश्रा, मिस इंद्रानी डे, मिस्टर पवन दुग्गल, मिस्टर वाई प्रभाकर राव, मिसेस पंजन सिंह बत्रा, मिस्टर राजेश शर्मा, मिस्टर असरार अहमद, मिस्टर दिवाकर गोयल, मिस्टर मुकेश भूटानी, मिस्टर रमेश कुमार नरूला, मिस्टर उद्यन मुखर्जी, मिस्टर राजीव कुमार चौधरी, मिस्टर सिद्धार्थ सेठी, मिस्टर नारायण लक्ष्मण राव, मिस्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर धनलक्ष्मी अय्यर, Rohit, how many people are there? 44, 45, 44. डॉक्टर विजेंद्र सिंह माध्यान, डॉक्टर सुषमा सिंह, रविचंद्र प्रकाश, आ जाओ। राइटर्स को जो है ऑथर्स की हालत यही है राइटर की मिस्टर सैयद अहमद नकवी, यही हालत होती है। मिस्टर अलके ठाकुर, सॉरी, राइटर की भीड़ ज्यादा है। and I request Dr. Amit Singhal from Apollo Hospital for health services in Supreme Court compound.
Mr. Harish Kumar Tanwar, Manager UCO Bank for banking services in Supreme Court compound. बैंक मैनेजर है जॉब हाँ कर दिया सर, नहीं अच्छा किया वो तो सबकी अभी बनाते हैं नहीं हो गया, अनाउंस कर दिया, अनाउंसमेंट इज कर ठीक है। Our six-time president, Mr. P.H. Parikh, former president, Supreme Court Bar Association, he has completed 50 years, above 50 years, 59 years. So please come on the stage, sir. Bipin? Bipin Vasan, books. Mr. Bipin? Vasan. Mr. Bipin Vasan? कोई नाम रहता नहीं क्या? ये अच्छा हो गया, नहीं तो ना नाम ढूंढने में टाइम लगता। आप अपने चीज है मेरा ना थोड़ा वेट कर लो। कल आपने बताया था मुझे दिक्कत ग्रुप फोटो बोला था, ग्रुप फोटो भी कर लेंगे लेकिन अभी ये फील्ड खुद ही हाथ से लेकर जाना ना, इट लुक्स वेरी एम्बैरेसिंग। जस्ट सेविंग टाइम बचाना है। उधर से किसी के हाथ से दिलवा दो, वहाँ पर किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी है, यहाँ से सर्च करना ढूंढना, इस पर सर्च नहीं करना, शील्ड के ऊपर सर्च नहीं करना, शील्ड तो सेम है, सर्टिफिकेट अपने हाथ में रख लेते हैं, शील्ड किसी का नहीं होगा। सॉरी फोटो के लिए देखो, अभी हम सब वापस जाने जा रहा था। इसमें तो कुछ नाम भी नहीं लिखा है, दे सकते हैं। सब नहीं बोला कैसे करो आप तभी डजंट लुक नाइस। हाँ पारिक साहब बुला लो, उनको दे दो एक मोमेंटो ना, उधर से किसी के हाथ से भी दिलवा दो। नेक्स्ट टाइम रोहित बी केयरफुल, जल्दी है। नहीं वो समझ रहे हैं, जबकि इसमें एक्चुअली ही शुड हैव शोन जेनरसिटी। ऐसा नहीं है, आप लोग क्या करते हो टाइम उसमें पहले से अपने हाथ में रखो, वो हमारे पास आएगा। उसमें उनको जेनरसिटी दिखानी चाहिए। अब देखो फोटो भी है उसमें आपका एक आदित्य सर कहाँ है? आदित्य सर better they could have called us in batches of 4 or 5 with the dignitaries, you know, to get it. So उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। इतने में तो वही वो हो जाता है। वो तो दोनों को कैरी करना पड़ा। पहले देने का मतलब क्या है अभी? भी तो नारी शक्ति होनी चाहिए ना। वही सर वही वो बगल में चंचू आपके बराबर I request everybody to stay in their seats because we will have a group photograph with the chief and with the law minister. Please stay in your seats. We're going to have a group photograph. Seats. We'll get the chief.
किस लिए? No, no, please don't do that. Please, anybody without the trophy, please don't come. We will all have pictures. No, all students have to go down. We are going to have a group picture. I'm so sorry. Please, we have already every. May I request Honorable Justice J.K. Maheshwari sir, Vishwanathan sir, Masih sir, and Amala sir, please come on the stage. Please. Just one second. Please, sir. Please. We'll just have a group photograph. Everybody, please stand there. Yes, just coming down. नहीं ऊपर नहीं, नीचे आ जाओ ना. इसी बुला लो और बाकी को नीचे करो. May I request Mr. G. Sesagri Rao and Mrs. Santhanam Krishnan for their contribution in the field of continuous legal education initiative. I request Executive Committee member, please come on the dais. सभी हैं. आपका हुआ नहीं अभी? आपका हुआ? नहीं अभी नहीं है. ग्रुप फोटो नीचे है. इधर ही बुलाना है. Then let everybody sit down. क्या करना है? रोहित नीचे चलो. रोहित नीचे. Okay, everybody, please come up and stand behind the judges. Please don't ensure that nobody is pushing each other. Everybody should come, will be visible. Please don't push anybody. Please stand at a distance. Everybody will be covered. We have various cameras and with various angles it will be covered. Please don't push. I request everybody to maintain distance. There are women, there are old people, and there are very senior dignitaries on the stage. I don't want. You guys take a picture. हमारे की आता रहती है. मैम आप तो रह गए. मेरी आती रहती है. No. मेरी आती रहती है. देखा तो मैं देख रहा हूँ वहाँ खाली वहाँ देखा था.